welcome to Prep Smart for TGT-PGT. This channel provides biology content for all TET, TGT-PGT exams. This is the series of human physiology considering the chapter Endocrine glands and hormones. This is the part 1 of the series. Also, this channel provides pointers of the full syllabus and questions to ace your preparation. So, for coordination, rapid coordination among organs, the neural system provides point-to-point rapid coordination. The neural system coordination is fast but short-lived. So there is a need of special kind of coordination and integration. This function is actually carried out by hormones secreted by endocrine system or endocrine glands. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the human body. So endocrine system plus neural system coordinates the regulation functions of body. What are endocrine glands? Endocrine glands are ductless glands as they lack ducts to store their secretions, which are called hormones. What are hormones? Hormones are the secretions of endocrine glands, and hormones are the non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers. These are present in trace amounts in human body and are released into the blood by the endocrine glands and transported to the target organ via blood. Next is human endocrine system. These are the two figures of a male human body or a female human body. So there are about 10 endocrine glands from starting with brain. Brain have 3: hypothalamus, pituitary gland and pineal gland. Here the pineal gland is not shown. Pineal gland is present somewhere here. This is the hypothalamus portion, pituitary gland. Next is thyroid gland, parathyroids, adrenal gland present towards the upper portion of the kidney, pancreas, and in the male the presence of testes, and the female the presence of ovary is there. These combines the human endocrine system. We will have a look at each of them one by one. One of the major endocrine gland is hypothalamus. प्रेजेंट कहाँ होती है? इसका लोकेशन है बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन पे प्रेजेंट होती है और इनमें होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जिनको हम न्यूक्लिय कहते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को. तो ये जो हार्मोन्स प्रेजेंट करते हैं इनका मेन फंक्शन होता है रेगुलेट करना सिंथेसिस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स. पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस हार्मोन्स को ये सिंथेसिस उसके सिंथेसिस को ये रेगुलेट करते हैं. जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन है इज टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एज द नेम इनहिबिटिंग हार्मोन का फंक्शन इज टू इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. द एग्जांपल ऑफ रिलीजिंग हार्मोन इज GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को एंड रिलीज करवाती है गोनाडोट्रोपिन्स जो है LH, FSH वो सब. एंड इनहिबिट सिक्रीशन, इनहिबिटिंग हार्मोन का जो फंक्शन एग्जांपल है वो है सोमैटोस्टैटिन, जो इनहिबिट करती है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. जो हार्मोन्स जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमस न्यूरॉन से, पास होते हैं थ्रू एक्सॉन्स टू रीच पिट्यूटरी ग्लैंड. व्हेन द हार्मोन रीचेस पिट्यूटरी ग्लैंड इट रीचेस बाय टू ways, that is through portal circulatory system, which hormones reaches pituitary gland through portal circulatory systems regulates anterior pituitary gland, and the hormones which regulates posterior pituitary glands is under direct neural regulation of hypothalamus. Okay, through this diagram we can see this is the portion of the hypothalamus. These are the neurons of hypothalamus जहाँ से हमारे हार्मोन्स ओरिजिनेट होंगे, पास थ्रू एक्सॉन एंड विच पोर्टल सर्कुलेशन. पोर्टल सर्कुलेशन से कहाँ जाएगी? वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को वो रेगुलेट करेगी एंड डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन पे है. हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन पे होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. द नेक्स्ट ग्लैंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. पोस्टीरियर पिट्यूटरी हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं. दिस इज द हाइपोथैलेमस पोर्शन एंड these lobules are of पिट्यूटरी ग्लैंड्स. दिस पोर्शन इज
anterior pituitary and this is the posterior pituitary, and this is the stalk of the pituitary gland which uh, joins both hypothalamus and pituitary gland. लोकेशन इज बोन कैविटी, एक बोन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं सिला टर्सिका. अटैच होता है बाय स्टॉक टू हाइपोथैलेमस. इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दो टाइप में इसे डिवाइड करते हैं, दैट इज एडिनो हाइपोसिस और एक है न्यूरो हाइपोसिस. एडिनो हाइपोसिस को अगर देखें तो तीन पोर्शंस में है, मेजरली दो पोर्शंस, दैट इज पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया. इन ह्यूमंस जो है पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिस दीज आर मर्ज्ड इनटू वन. पार्स डिस्टैलिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं एंड न्यूरो हाइपोसिस हैव पार्स नर्वोसा, उसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं. अब हम देखते हैं कि किस पोर्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं एंड उनका फंक्शन क्या होता है. सो ब्रीफली adenohypophysis is anterior pituitary gland and neurohypophysis is posterior pituitary gland. So anterior pituitary gland से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, that is growth hormone, prolactin, thyroid stimulating hormone, adenocorticotropic hormone that is ACTH, luteinizing hormone LH, follicle stimulating hormone FSH, melanocyte stimulating hormone MSH. melanocyte स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है पार्स इंटरमीडिएट पोर्शन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस एंड बाकी सारे ये जो हार्मोन्स है ये सारे पार्स डिस्टैलिस से सिक्रीट होता है. नेक्स्ट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिक्रीट करती है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को. ये दो हार्मोन्स ही सिक्रीट करती है. इनका फंक्शन कौन कौन से ऑर्गन या ग्लैंड को रेगुलेट करता है देखते हैं. दिस इज द पोर्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. दो हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. वैसोप्रेसिन को अनदर नेम दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH भी कहते हैं, जो किडनी पे फंक्शन करता है. नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन जो कि मेमोरी ग्लैंड्स पे फंक्शन करता है. गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स दैट इज LH एंड FSH फंक्शंस ऑन द testes and ovaries of male and female respectively. And human growth hormones secreted by anterior glands function on bones and muscles for the growth and development of the body. Thyroid stimulating hormone functions on thyroid gland. Adenocorticotropic hormones function on adrenal portion of the kidney. And last is melanocyte stimulating hormone MSH secreted by pars intermedia of the एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शंस ऑफ द स्किन. ये तो हुआ कौन कौन से हार्मोन्स, इनका क्या क्या फंक्शन है प्रॉपर देखते हैं. ग्रोथ हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट फंक्शंस ऑन बोन्स एंड मसल्स. ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स लीड्स टू abnormal growth of body, also termed as gigantism. Low secretion, stunted growth, also known as pituitary dwarfism. डार्फ एंड टाइगेंट होगा बॉडी हमारा ग्रोथ हार्मोन के ओवर सिक्रेशन या लोअर सिक्रेशन से. नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन को हम PRL भी कहते हैं, जो कि हमारा ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम का फंक्शन करता है. TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फंक्शंस ऑन थायराइड ग्लैंड विच स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड. ACTH इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन functions on adrenal, okay, which helps in the synthesis and secretion of steroid hormones from adrenal cortex, जिसको हम उन हार्मोन्स को हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जो कि कैसा हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से. गोनाडोट्रोपिन का रिलीज करवाता है जो कि है LH एंड FSH. LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. इन मेल्स इन फीमेल्स अलग अलग फंक्शन करती है. इन मेल्स जो है वो सिंथेसिस कराती है और सिक्रेशन कराती है एंड्रोजेंस का, और इन फीमेल्स वो इंड्यूस करती है ओव्यूलेशन को फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल्स एंड मेंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पस ल्यूटेम. एंड FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन मेल्स में वो एंड्रोजन FSH एंड एंड्रोजेंस होते हैं जो मिल्क एंड्रोजेंस किसकी वजह से सिक्रीट होंगे, LH की वजह से.
FSH and LH both functions combinedly and stimulates spermatogenesis. FSH in females growth and it stimulates growth and development of ovarian follicles. ये था फंक्शन. और बचा क्या हमारा MSH that was from anterior pituitary gland के पास intermediate portion से. Next है MSH and then the two hormones secreted by pituitary, that is vasopressin and oxytocin. MSH functions acts on melanocytes, the cells containing melanin, checks the pigmentation. Vasopressin acts on kidney to stimulate the reabsorption of water and electrolytes and also does diuresis, thus उससे हम कहते हैं antidiuretic hormone ADH. ऑक्सीटोसिन किस पे काम करता है? स्मूथ मसल्स पे स्टिमुलेट करता है उनका कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस को स्टिमुलेट करता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड स्टिमुलेट करता है मिल्क का इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड. मिल्क का फॉर्मेशन कौन स्टिमुलेट करता है? प्रोलैक्टिन. ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेन बट प्रेजेंट इन द डॉर्सल साइड ऑफ द ब्रेन. बेसल पार्ट ऑफ द ब्रेन में हमारा प्रेजेंट था हाइपोथैलेमस, बिलो दैट पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड डॉर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन में प्रेजेंट है पीनियल ग्लैंड. इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन. मेलाटोनिन functions in the role has a role in regulation of 24-hour diurnal rhythm of body. It maintains the rhythm of the body. Example like sleep, wake cycles, body temperature. It also influences metabolism, pigmentation, and menstrual cycle in women. Also, it helps in defense capability. यहाँ हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ये है छोटा सा ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट इन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन. ये हेल्प करता है स्लीप वेक साइकिल्स मेंटेन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटी है. ठीक है. So rest of the endocrine glands will be covered in the next video. Do give a like, share and subscribe to Club Smart for TGT-PGT for the further series, and the rest of the do watch part 2, 3 and 4 of this series.